A very good evening to all. This is Karan Pai coming to you with the second episode of our currency trading series. And today we will be talking about the pound INR, or commonly known as GBP INR. And in this video we'll be looking at what moves the GBP INR pair, क्या फैक्टर्स है जो GBP INR पेयर के मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं, एंड इसे कहाँ से एनालाइज करना है, कैसे एनालाइज करना है. बट बिफोर गेटिंग इनटू ऑल दैट, let us first take a look at what has happened in the GBP INR pair. सो ये जो चार्ट है, दिस इज डेली चार्ट ऑफ जीबीपी आईएनआर कंटिन्यूअस फ्यूचर्स. नाउ इसमें अगर आप देखो तो एक क्रूशियल सपोर्ट जोन बन रहा था, जो दो ब्लू लाइंस है, दैट इज समवेयर इन बिटवीन 99 एंड 9920. इसे टेक्निकल टर्म्स में मल्टीपल टच पॉइंट कहते हैं. एंड यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, दैट इज जब भी ये सपोर्ट के पास आया था, यहाँ से देयर वाज अ बाउंस. एंड इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड और प्रोबेबली टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ मई, इसमें एक ये जो सपोर्ट लेवल था, इसका हमें ब्रेकडाउन दिखाई दिया. एंड वो ब्रेकडाउन के बाद जो जीबीपी आईएनआर फ्यूचर्स का पेयर है, दैट एक्चुअली नोज डाइव्ड ऑल द वे टू अबाउट 9450. एंड वहां से अभी फिलहाल हमें थोड़ी रिकवरी दिखाई दे रही है, बट कहाँ तक एंड क्यों, ये आने वाले स्लाइड्स में आपको पता चलेगा. बट द की थिंग, ये जो नोज डाइव था, दैट इज व्हाट गॉट द पाउंड इनटू द लाइमलाइट. एंड हर जगह पर जब भी हम करेंसी की बात कर रहे थे, सो पाउंड वाज आल्सो a part of the discussion everywhere. Now, before getting into any further details, let us first see कि ये जो GBP INR कोट है, ये हम अराइव कैसे करते हैं, इसे डिराइव कैसे करते हैं. सो टू डिराइव दिस कोट, हम लोग को दो कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी. वन इज द GBP USD और द पाउंड डॉलर, एंड नेक्स्ट इज द डॉलर रुपी. द प्रोडक्ट ऑफ GBP USD एंड द USD INR इज GBP INR. सो इसे हम एग्जांपल में देखते हैं. सो अज्यूम कि जीबीपी यूएसडी जो है फिलहाल चल रहा है 1.2584, एंड डॉलर रुपी जो है वो 77.57 के प्राइस पर है. सो इसका अगर हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे, वी कम अप विथ जीबीपी आईएनआर पेयर, दैट इज 96.35. सो वील अंडरस्टैंड दिस कोट अ बिट मोर नाउ. सो जब भी हम बोलते हैं कि जीबीपी आईएनआर की सीएमपी या करंट मार्केट प्राइस 97 है, इसका मतलब हम ये कहते हैं कि फॉर अ बायर, he or she will have to pay 97 rupees for 1 pound, 97 rupees to purchase 1 pound. ठीक है, अभी हम इसे दो सिनेरियोस में स्प्लिट करते हैं, जहां पर से मिस्टर ए ने जीबीपी आईएनआर का फ्यूचर जो है वो परचेज किया है एट 97, एंड वहां से द प्राइस वेंट टू 100. दैट इज 3 रुपीज का डिफरेंस इसमें हमें दिखाई दिया. 3 रुपीज से प्राइस ऊपर मूव हो गया है. So यहाँ पर Mr. A can sell the pound that he purchased at 97 at 100. So he is making a profit of 3 rupees for one single pound. Similarly, second scenario में अगर आप देखें, जहाँ पे हम लोगों ने assume किया है कि it has gone down to 94. So जो pound Mr. A ने purchase किया था at 97, today if he wants to sell it, he'll be able to sell it at 94. So he's basically incurring a loss of 3 rupees. So ये जब जीबीपी आईएनआर पेयर ऊपर जाता है, द बायर मेक्स अ प्रॉफिट, एंड जब जीबीपी आईएनआर पेयर नीचे जाता है, द बायर मेक्स अ लॉस. सो नाउ वी लुक एट ये जीबीपी यूएसडी के प्राइसेस जीबीपी आईएनआर को कैसे अफेक्ट करते हैं. अगर आपको याद होगा, दो स्लाइड्स पहले जब हम कोड डिराइव कर रहे थे, हम लोगों ने बोला था कि जीबीपी यूएसडी एंड यूएसडी आईएनआर, दे आर द टू फैक्टर्स दैट आर यूज्ड टू डिराइव द जीबीपी आईएनआर कोड. सो यहाँ पर एक बेस केस सिनेरियो हम लेते हैं, जहाँ पर यूएसडी आईएनआर विल कीप इट स्टेबल एट 77.75, एंड बेस केस फॉर जीबीपी यूएसडी वुड बी 1.2347. सो ये जो ब्लू में जो भी मार्क्ड है ऑन द जीबीपी यूएसडी एंड द जीबीपी आईएनआर फ्रंट, इसे हम बेस केस लेते हैं. सो व्हेन जीबीपी यूएसडी इज एट 1.2347 and USD INR is at 77.75, GBP INR का जो कोट है, that comes at 96. Now we'll take scenario one, जहां पर जो GBP USD है, that moves higher from 1.2347 to 1.2399. एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि GBP INR पेयर जो है, that has actually moved to 96.40. नेक्स्ट स्टेप,
it moves, the GBP USD moves up from 1.2399 to 1.2450, and जो pound rupee है, that moves from 96.40 to 96.80. Now we'll look at the flip side, the other part. So instead of moving higher, this time around, जो pound dollar है, it moved lower. From 1.2347, it moved to 1.2296. And जो pound rupee है, that went from 96 to 95.60. Another negative tick from 1.2296 to 1.2244, and the pound rupee that moved from 95.60 to 95.20. So अगर आप carefully observe करो जीबीपी यूएसडी के प्राइस को एंड जीबीपी आईएनआर के प्राइस को, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो. So as the GBP USD appreciates, the GBP INR also goes higher. As in when GBP or pound appreciates against the dollar, the pound also happens to appreciate against the rupee. So now we'll look at the contract specification. अभी हमने कोड derive कर लिया, उसके सारे effects of how it is affected by the pound dollar वो भी हम लोगों ने देख लिया. We'll look at the contract specification. So the lot size is 1,000 pounds. So earlier example में जहां पर हम लोगों ने देखा था कि मिस्टर ए ने 1 pound परचेस किया था, अगर उसे परचेस करना है, he has to purchase one lot, so it will be 1,000 pounds. The tick size is 25 paisa and the tick value is 2 rupee 50 paisa. So that is the tick value is basically the tick size into the lot size. The trading hours are weekdays from 9 a.m. to 5 p.m. and expiry of the first month contract is 12:30 p.m. of the third last business day. The settlement happens on the RBI reference rate. Now the question comes कि यहाँ पर हमारे पास चार पेयर्स हैं, उसमें से हम जीबीपी आईएनआर पर ही क्यों फोकस करें? So here are the two main reasons why you should be focusing on GBP INR. So first is high volatility. Uh, हम लोग देखेंगे GBP INR is one of the most volatile pairs. And second is हाँ यहाँ पर हमें leverage अच्छा मिलता है. So first we'll focus on the high volatility. So first of all, before we enter into high volatility, let us first see what volatility is. So volatility is basically the daily price fluctuations. कि daily एक particular underline कितना move करता है. यहाँ पर जीबीपी आईएनआर की अगर हम लोग बात करें तो एवरेज डेली वॉलेटिलिटी जो है दैट कम्स टू अबाउट 60 पैसा, एंड 60 पैसा फॉर अ करेंसी, ट्रस्ट मी, बहुत बड़ी बात होती है. सो यहाँ पर बिकॉज देयर इज हाई वॉलेटिलिटी, एक हायर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पर बनते हुए दिखाई देती है. इंट्राडे में इफ यू आर एबल टू मेक 60 पैसा इन करेंसी, से फॉर एग्जांपल 60 पैसा है, अगर आप इसमें से 30 पैसा भी कैप्चर कर पा रहे हो, इट्स अ वेरी गुड थिंग. एंड यहाँ पर एक हाई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें बनते हुए दिखाई देती है, स्पेशली इन जीबीपीएनआर, बिकॉज एज आई टोल्ड यू दिस इज one of the most volatile currency pairs that are traded on the NSE. Now coming to the next factor, leverage. Now leverage में जाने से पहले we look at what the contract value of GBP INR is. So assuming that the prices are at 96.95, the contract value is basically the lot size into the price. So that comes to about 96,950. And margin as on 20th May 2022 was 3,000 rupees. So अगर हम लोग इसका एक divide कर ले, that is by 90, that is 96,950 को, if we divide by 3,000, we will get that approximate leverage. So that comes to about 32 times. So when you want to trade one single pair of GBP INR, जिसका price 96,950 है, all you have to pay is the margin of 3,000 rupees. So it's a big deal. यहाँ पर leverage आपको अच्छा मिल जाता है. So now, as we told you, यहाँ पर we will look at how to trade GBP INR, and one of the first things that comes to mind is what to track when trading GBP INR. So currencies, we have been telling that they are a relative play, and उसमें आपको बहुत सारे factors देखने होते हैं. So these we have actually, there are multiple factors that one needs to look at. So यहाँ पर हम लोगों ने four important factors point out किए हैं. So the first one is the economic data. The second is the comment from the members of the central banks, that in this case Bank of England. Then there is the yield differential, and the fourth is the risk sentiment.
Now, don't be worried. We'll be explaining all these things in the slides to come. So first, we'll look at what economic data is. So economic data जो है, you can pause the video and take a look at all the economic data. I mean, explaining every single component is actually beyond the purview of this video. So you can just pause the video here. You can take a look at all the economic data that we focus on. And ये जो भी economic data जो आप track करोगे, all of that data is available on forexfactory.com. So that is something that you have to track. So I'll broadly tell you what are the economic data that we track. So first is the GDP data, the job report, the CPI inflation, the retail sale, Halifax housing price index, the flash PMI for manufacturing and services, and the Bank of England policy. So next, this is basically a comparison between the economic surprise index. Now, what economic surprise index tracks is basically जो इकोनॉमिक डेटा रिलीज होता है वो एक्सपेक्टेशन से कितना बड़ा सरप्राइज देता है. सो फॉर एग्जांपल अज्यूम कि वी हैव द जीडीपी डेटा टुडे. ओके, जस्ट एन assumption. Say for example GDP का expectation is X and it comes at X plus 10 points. Okay, so it's positive. The economy has grown. So that will be definitely positive for the pound. Okay, so यहाँ पर अगर आप देखो तो जो सरप्राइज इंडेक्स है, हियर द ब्लू लाइन दैट इज द इकोनॉमिक सरप्राइज इंडेक्स एंड द रेड लाइन दैट इज द जीबीपीआईएनआर. ये लेजेंड में हमें पता चल जाएगा. सो जो सरप्राइज इंडेक्स है, as it goes higher, the GBPINR also moves higher. Okay, now we'll take another scenario जहाँ पर GDP जो है उसका एक्सपेक्टेशन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे X and the actual figures were X minus 10. So जो economic surprise index है that comes down and or it is slightly negative. So उसी according the GBPINR will also start moving down. There is another scenario in this when it is in line with the expectation. So, say in the current scenario, um, say the central bank is planning, or the central bank is sounding hawkish, and they are telling that there might be a 50 basis point hike. Again, this is a hypothetical situation in the coming meetings. So that is already priced in, and if the central bank increases the rates by say 50 basis points, the market has already priced in. So there is absolutely no surprise. सो एट दैट टाइम जीबीपी जो पाउंड जो है वो थोड़ा म्यूटेड बिहेव करेगा बिकॉज द मार्केट हैज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन दैट कुछ ये ऑलरेडी बोला गया था एंड दिस इज व्हाट हैज बीन डन. So that is one thing to keep in mind. So the economic surprise index that basically tracks कि ये कितना deviate करता है from the expectation. Now the yield differential. So जब हम yield differential की बात करते हैं, this is basically the difference between the UK and the US bonds. So the difference between the UK 10-year and the US 10-year bonds. Now what does this show? जब भी हम ये yield differential plot करते हैं and of course यहाँ पर भी जो blue line है that is the yield differential and the red line is the GBPINR spot. So जब ये blue line हमें ऊपर जाते हुए दिखाई देता है, that clearly shows that UK's 10-year yields are higher than the US 10-year yields. So जो पैसा है that will actually start flowing in the pound, which is higher yielding as compared to the dollar. Similarly, जब ये डाउन ट्रेंड में होता है, the differential when it is in downtrend, that clearly states that US 10-year bonds are more attractive than the UK 10-year bonds. Yeah, dollar here is a higher yielding currency. So obviously there will be a capital flight from the pound to the dollar. So इसका जो relation है, it is direct. So whenever you see that the differential yields are actually turning around, for example यहाँ पर अगर आप देखो, so GBP INR में भी we can expect a similar move. We can see that against the dollar, the pound will actually come down, and I mean against the dollar the pound will underperform. And जैसे हम लोगों ने पहले देखा था कि pound dollar and pound rupee they actually move in tandem. So जब pound dollar underperform करेगा, pound rupee भी underperform करेगा. That is when the pound depreciates against the dollar, the pound depreciates against the rupee as well. Now the risk sentiment.
सो रिस्क सेंटिमेंट, जब भी हम लोग करेंसीज की बात करते हैं, वी हैव टू टेक अ लुक एट व्हाट इज द रिस्क सेंटिमेंट. सो आपने ये टर्म सुना होगा, रिस्क ऑन रिस्क ऑफ. So risk on is a situation where people are willing to take more risk rather than putting their money into the safe haven. And risk off is a situation where people are risk averse, जहां पर पैसा रिस्की एसेट से बाहर निकलकर सेफ हेवन में जाता है. सो जीबीपी आईएनआर जो है among the developed countries, that is a high beta currency. So जिस दिन रिस्क ऑन रहेगा, we'll see more money, get into the pound. सो ये जो आप चार्ट देख रहे हो, दैट इज बेसिकली नैस्डैक. नाउ जब पैसा इक्विटीज में जाता है, कीप इन माइंड दैट इट्स अ रिस्क ऑन सिचुएशन जहां पर इक्विटीज आर कंसिडर्ड टू बी मोर रिस्की. सो इक्विटीज में जब पैसा जाता है, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ रिस्क ऑन सिचुएशन. एंड जब ये रिस्क ऑन सिचुएशन होता है, द पाउंड विल एक्चुअली आउट परफॉर्म. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन, या जो पाउंड रुपी है, उसका अगर हम लोग चार्ट देखें, तो इट एक्चुअली सॉर्ट ऑफ replicates the Nasdaq. The next economic factor that you have to look at is at the central bank tone, that is the Bank of England tone and decision in this case. So, taking the current situation in mind, or keeping the current situation in mind, where Fed is continuously talking about increasing the rates by 50 basis points in the coming meetings, यहाँ पर a positive or a hawkish tone from the Bank of England or a rate hike by the Bank of England is always considered positive for the pound. Similarly, in such a situation, if they sound dovish, or say if they reduce the rates, then it will be negative for the Bank of England. Now, we have looked at the factors that affect the pound, how the price moves with respect to the pound dollar. Now, the question comes how to trade the pound INR. So, this is a derivative. So, like any other derivatives, we have two instruments here. So, one is options and another one is futures. And in options, we have calls and puts. Unfortunately, pound rupee की अगर हम लोग बात करें, तो options aren't that liquid, and futures, maybe the current month contracts have liquidity. The next month contracts are fairly liquid, but they are not as liquid as the first month contracts. सो यहाँ पर हम लोग recommend करेंगे, द मेजर फोकस शुड बी ऑन द करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट्स. सो अभी की अगर मैं बात करूँ, तो इट विल बी 27th में. सो जो करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट्स है, उसमें ज्यादा फोकस करें तो बेटर होगा. Where to trade? Now, you have multiple platforms when you are trading with Kotak Securities. So you have a phone app that is available for both iOS and Android. You can download our Kotak Securities application and start trading the currency pairs. Or what you could do is, from your browser, visit www.kotaksecurities.com, and you will be I mean, the website will ask you for your credentials. Type in your credentials, log in, and create a currency watch list like I have done here. एंड ये जो हाईलाइटेड एरिया है, वहां पर मैंने जीबीपी आईएनआर को हाईलाइट किया है. एंड अगर आप यहाँ पर देख सकते हो, इट गिव्स यू बाय एंड सेल. सो बेस्ड ऑन योर व्यू, यू कैन आइदर बाय और sell the currency pair on our website. Now coming on to what the outlook or what we expect. सो जैसे मैंने आपको बोला था इन द फर्स्ट स्लाइड, 9920 से 99 का जो फ्यूचर्स में लेवल था, वो उसने ब्रीच कर दिया था. एंड द प्राइस नोज डाइव्ड ऑल द वे अप टू 9450. वहां से अब हमें थोड़ी अपमूव, आई मीन थोड़ी रिकवरी दिखाई दे रही है. बट ऑलवेज देर इज अ रूल इन टेक्निकल, द previous support will now act as resistance. So we can expect 99 to 9920 to act as a resistance in the coming sessions. And on the downside, as long as we remain above 9450, view यही रहेगा कि there is a possibility of prices moving higher, or there is a possibility of the pair moving higher. Now, just a fun fact. I don't know how many of you know this, but pound dollar is also considered as cable. So this there is a backstory behind this as to how that cable term was coined. So this goes
all the way back to the telegraphic times. So जो कोट था पहले पाउंड डॉलर का, it used to be transferred via transatlantic telegraph. Now this जो telegraphic transfer होता था, that used to go via cables. So that is why the pound dollar, or the veterans in the market call the pound dollar as cable. So the next time when somebody tells you कि cable पर मैं bullish हूँ, that means they're bullish on pound dollar. Cable पे मैं bearish हूँ, as in they're bearish on pound dollar. So this was just a fun fact kind of thing that we added. Uh, if you like this video, do follow our Telegram channel, that is Currency Corner by Kotak Securities. Then also we will keep posting videos about currency trading, and so to be updated, please do subscribe to our YouTube channel, press the bell icon. And I hope that you found this video informative. I hope आपको देखकर अच्छा लगा हो ये video. Uh, and that's all for today. We'll see you in the next video. And till then, stay safe, trade safe. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.